नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया की इस लाइव स्ट्रीमिंग में। मैं आपके साथ योगेश रंटा, मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा हमेशा की तरह मेरे साथ, और हम जुड़े हैं आपके साथ इसलिए क्योंकि आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। जी हां, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर और झारखंड की 81 सीटों पर चुनाव की घोषणा आज चुनाव आयोग ने कर दी है। और सबसे पहले तारीखें आपको बता दें जिन्हें अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। झारखंड में 81 सीटें हैं, 2 चरणों में मतदान होना है झारखंड में, जिसमें पहला चरण 13 नवंबर को होगा और दूसरे चरण के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, 288 सीटें, लेकिन एक ही चरण में वहां पर मतदान होना है और मतदान की तारीख होगी 23 नवंबर 20 नवंबर 2024 और 23 नवंबर 2024 तारीख है मतगणना की, यानी कि नतीजों की। 23 नवंबर 2024 को तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में क्या महायुति गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में आएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना और एनसीपी का गुट है, या फिर महाविकास आघाड़ी जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला गुट है, एनसीपी शरद पवार वाला गुट है और कांग्रेस पार्टी है, क्या वो वापसी सत्ता में कर पाएगी, ये तय होगा। और झारखंड का भविष्य भी 23 तारीख को तय होगा। 23 नवंबर को क्या वापस हेमंत सोरेन, जिस तरह से उनको जेल जाना पड़ा, गद्दी छोड़नी पड़ी, वापस एक बार फिर से कम बैक करेंगे और अपनी कुर्सी को सही सलामत रख पाएंगे, या फिर बीजेपी का गठबंधन वहां पर बाजी मारेगा। पंकज। Well, Yogesh, thank you so much. Good evening to our viewers here. The announcement has been done for the two states assembly elections, as my colleague mentioned, that it is 13th of November and 20th of November of next month, when the Jharkhand Assembly election and Maharashtra Assembly election will happen. Both of them, Yogesh, are interestingly Wednesday. It's a weekday on which they have chosen. And 23rd November is the counting for not just these two states, but also the by-polls that are happening. In the course of the day, we will be telling you what are the dates for by-polls. But as of now, the Election Commission, Yogesh, has made it clear that they don't want any urban apathy. When you are dealing with Maharashtra, when you are dealing with tier 1 cities, then you want to have a high number of voting, and hence no weekend votes this time around, so that people can take long weekend off and go away and skip voting. So that is how it is. They can enjoy the counting because counting is on Saturday. That is weekend. Well, they can watch it from wherever they want to, from the beach or the mountains that Maharashtra has to offer, and likewise Jharkhand too. So this is how it is as of now. And a panel of guests have also joined us here. Yogesh, would you like to before take that, Pankaj talked about the बाईपोल्स ऑल्सो। 48 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पर बाईपोल होने हैं, जिसमें 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश भी महत्वपूर्ण है। पंकज, 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं जिन पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 13 तारीख को वहां पर वोट डाले जाएंगे। वायनाड की सीट जो राहुल गांधी की खाली हुई है, वहां पर भी 13 तारीख को मतदान होगा। इसके अलावा एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटका में भी है, उत्तराखंड की है, जिसमें 20 तारीख को वोट डाला जाएगा, और एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नांदेड़ की महाराष्ट्र की है, जहां पर 20 तारीख को मतदान होगा। बाकी जगह पर 13 तारीख को ही बाई इलेक्शन में पोल होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये 10 सीटों पर है, ये भी देखने वाली बात होगी, महत्वपूर्ण होगा कि क्या वहां पर समीकरण बनते हैं। अखिलेश यादव कितना जोर लगा पाते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ कितना जलवा दिखा सकते हैं। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिसमें निरंजन शेट्टी हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, मनु शर्मा सिफोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा भानुचंद्र नागराजन पॉलिटिकल एनालिस्ट है और पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और हमारे साथ एडवोकेट मैथ्यू एंटनी साहब भी जुड़ गए हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है और एआईसीसी के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जेंटलमैन, अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, हफ्ता लगभग बीता है जब पिछला चुनाव हम लोगों ने देखा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह की गहमा गहमी रही, और अब अगले चुनाव की जाहिर तौर पर तैयारियां हैं। सबसे पहले निरंजन शेट्टी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है दोनों राज्यों को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनी, तोड़ हुई दोनों गुटों के अंदर, और उसके बाद सरकार बनाने में आप लोग जो है वो सफल हुए, उसे देखते हुए महाराष्ट्र कितना बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है, और झारखंड जहां पर हालांकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से थोड़ा सा बेहतर किया है आप लोगों ने, वो कितना चैलेंज आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक महाराष्ट्र की बात होगी, और मैं महाराष्ट्र को बिलोंग करता हूं और मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि जिस प्रकार से हमने पिछले 2-2.5 साल में जो काम किए हैं और जनता के हित में काम किए, इस बातों को मद्देनजर रखते हुए
पूरी आवाम जो महाराष्ट्र की आवाम है वो निश्चित ही उसको आकलन करेगी और इसके पहले जो महाविकास आघाड़ी थी उनके कामों को आकलन करेगी, तो निश्चित ही वहां पर हमारा पलड़ा भारी रहेगा। और इस दरमियान जो भी हमने पिछले 5 साल में जिस वक्त हम गठबंधन सरकार में थे, वो रुके हुए कामों को हमने पूर्ण करने का प्रयास किया। तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि उस 5 साल के काम और इस 2 से ढाई साल के काम को एकत्रित करके जब हम जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाएंगे, तो निश्चित ही एक बहुत ही आशय वाला काम वहां पर दिखेगा। जी, और झारखंड पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, निश्चित मैं झारखंड से ज्यादा अनुभूति नहीं रखता, इस कारण से मैं उस ठीक है, संदर्भ में ठीक है। बिल्कुल। वापस वापस आपके पास मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मैथ्यू साहब, उनके पास भी चले जाते हैं। पहले एक बिल्कुल, रिएक्शन बिल्कुल, सबसे ले बिल्कुल। लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैथ्यू साहब, आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में काफ़ी कॉन्फिडेंट लगते हैं आप लोग, क्योंकि सीटें आपने लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छी जीती वहाँ पर महाविकास आघाड़ी ने, लेकिन कॉन्फिडेंट हरियाणा में भी थे, बाजी पलट गई। तो महाराष्ट्र क्या कहेंगे आप, और फिर झारखंड में आप क्या कहेंगे? मेरे लिए आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। आपको मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? आप दे दीजिए। मुझे रेंज का प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, पहले से ही आ रहा है। तो आपको मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? अभी सुनाई आ रहा है या वीडियो? जी जी, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। हाँ, मेरे को वो कट कट बोलिए। करके आ रहा है, इसलिए तो मेरे को कनेक्ट। ओके, तो आपके सवाल आप में आप तो चलिए, मैं we'll connect महाराष्ट्र it के बारे again. में रिकनेक्ट बताता प्लीज। हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज ओके कैरी ऑन। ओके ओके ओके, I'll reconnect. चलिए, हाँ, पहले मैं महाराष्ट्र के बारे Please में बात reconnect. करता Thank हूँ। you. तो महाराष्ट्र, Please carry on. लग रहा है संपर्क टूट गया। प्लीज़ रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मैथ्यू एंटनी। खैर, उससे पहले मनु शर्मा, आपका आंकलन, इनिशियल रिएक्शन। देखिए, इनिशियल रिएक्शन अगर प्रथम आंकलन है वो सबसे पहले तो हम जानते ही हैं हरियाणा में क्या हुआ। हरियाणा में एक बहुत ही अप्रत्याशित सा एक नतीजा सबको देखने को मिला, जिसमें अक्सर ये होता है कि जो राजनेता होते हैं वो चौंक जाते हैं चुनाव का नतीजा देखकर, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि सभी के सभी लोग चौंक गए और हर कोई अपने अपने कयास जी लगा रहा है। तो अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें कई तरीके के उत्तर आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, वो ये है कि पिछले साल से कांग्रेस के पास एक लगता था कि एक फॉर्मूला आ गया है, जिसमें सामाजिक न्याय की धुरी को वो इस्तेमाल करके बार बार उस पे राजनीति को केंद्रित करना चाह रहे थे, और उसके द्वारा वह सोच रहे थे कि चुनावी एक कमबैक जो है वो कांग्रेस का नेशनली भी और भिन्न भिन्न जो जो प्रांतीय चुनाव हैं उनमें होता जाएगा। जी जी तो जाहिर सी बात है कि कई जगह सफलता मिली भी कि एक सामाजिक न्याय और फ्रीबीज के साथ मिला। अब ये ऐसा लग रहा है शायद कहीं ना कहीं कि पहली बार बीजेपी ने कोई उसका एक काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश करी है जो चला भी है। तो यक्ष प्रश्न हम सबके सामने एक ही होगा, क्या हरियाणा का जो फॉर्मूला है बीजेपी का वो स्केलेबल रहेगा महाराष्ट्र और झारखंड में भी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक। बिल्कुल। भानुचंद्र नागराजन। Ji, Bhanu, welcome to One India. Well, the way things have gone down, as Manu also mentioned, that the success formula of the BJP in Haryana, whether it would replicate or whether it's the same playing ground, how do you look at it from the Maharashtra point of view, where there could be surprise factors, and as far as Jharkhand is concerned, well, BJP is leaving no stone unturned there. What are the chances that you foresee for the BJP there? I think you have to unmute yourself, Bhanu.
Seems there You is are some not issue. audible. You are not audible. I think एडवोकेट मैथ्यू एंटनी आपको आवाज़ मिल पा रही हो तो प्लीज़ वही सवाल महाराष्ट्र हाँ झारखंड जी कितने कॉन्फिडेंट आप प्लीज़ हाँ okay sorry for the inconvenience with the technical issues. No, that's fine. We are very confident with respect to Maharashtra. Am I audible right now? राइट सर राइट यस Am I audible? Okay. Yeah. We are very confident with Maharashtra for the simple reason that the very government which is in place has insulted the pride of Maharashtra. मराठी अस्मिता को अपमान कर करके यही लोग आया है. The two parties, regional parties, which had its origin in Maharashtra, Shiv Sena of Bal Thackeray and NCP of Sharad Pawar, was backstabbed by encouraging the people within the organizations to split the party from the middle and insult the people of Maharashtra. Second is the law and order issues in Maharashtra. Everybody has seen what has happened 2 days back. That was the fourth firearm incident with the people. One was Ganpat Gaikwad in 2nd of February. Then we had Sada Sarvankar using firearms in Dadar. Then we have Abhishek Gusalkar, a former cooperator, being shot on a FB Live. Then we have Baba Siddiqui, who was a former MLA and a minister from the ruling alliance, shot on point blank, shot to death. Then we have an NCP Ajit Pawar district president being stabbed to death. 21 stabs, has been made on him in Worli. And then now we have 64,000 women missing from the state of Maharashtra every year. 2,851 people died in 2023 farmers, 2,142 farmers died in 2022, 2,743 farmers died in 2021, 557 has already died. And the banks are capturing the tractors, houses and everything, whereas they are not able to touch any of the richer guys. And this is where the Maharashtra, the price rise, the loot of the government, everything one by one, the people of Maharashtra will be questioning. You saw that in the Lok Sabha results. We're just going to see a higher version of that one in the assembly elections. That's on Maharashtra. And Jharkhand, yes, we have said that we are going to fight the election on alliance with JMM on the 81 seats, and we are confident of a victory. The seat sharing will be finalized soon because Himanta Biswa Sharma had got all the information of election dates, much before than anybody else. Whereas, he kind of confirmed yesterday that the election dates are going to be announced today. Whereas, nobody else had much of a clue about it. So this is the kind of advantage which BJP is playing with the government and with the information and with the power which they can access. But whereas we are fighting with the democracy for the people, we have put across the needs of the people, and we are very confident of winning both in Maharashtra as well as in Haryana, as well as in Jharkhand. I'm sorry. Right. Yeah. Bhanu Chandan Nagarajan is there with us. Hopefully the audio is better now. Bhanu is a political analyst and public policy expert. Bhanu, picking up from where Advocate Anthony left, if we take a look at the whole complex scenario in Maharashtra, there is, एक भरोसे और भरोसे को धोखे में बदलने वाली कहानी. Both of them, are there in the narrative. For a BJP contesting on a strong footing in Maharashtra, let's begin with that. Do you believe that they would be able to inculcate or they would be able to garner the same support that they once had with Shiv Sena, undivided Shiv Sena, or things have changed completely? Can you hear me now? I hope I'm audible. Yes. Am I audible? Okay, good, fantastic. One of the previous speakers was saying that, talking about the formula that worked for the BJP in Haryana, we have to understand what that formula is so that we can analyze whether it's possible for BJP to replicate in other states. See, you guys have covered many elections, seen many elections. In elections, there are a pro or an anti-wave against a leader or a party, or sometimes an issue comes up that takes the mind space of the electorate and people vote based on it. In Haryana, what we saw was none of that happened. It was actually into the nitty-gritties, into the booth management, the ticket selection, putting up rebel candidates, the nuts and bolts of elections, right? So whether that is the formula for success in Haryana, I think so. And if that is the thing, BJP does that in every elections. So irrespective of whether they win or lose. So I think that advantage will always be there with BJP.
See, in certain states where there's a strong high command, say like in Rajasthan or Haryana, the Congress usually are very close in these sort of booth management tactics. But in Maharashtra, without a strong state leadership, the BJP's advantage in these nitty-gritties, in these booth level infrastructure and booth level work is much higher. That is number one. Number two, like in real life, you cannot encash the same check twice. Okay, so you cannot work on the same issues that worked for you before. That was a mistake that Congress in Haryana committed. That the same Dalit angst against the BJP, the farmers' agitation, the restless agitation, they are going to reap a reward for them again, like they did in Lok Sabha. So we learned a lesson, and if you use that analogy in Maharashtra, the same issues like the same Dalit angst or the farmer agitation or the OBC agitation will not find as much importance as it had happened in the Lok Sabha election. So like, we have to find out like what are those. And if you look at the Lok Sabha vote share, both of them are very similar. Both the Mahavikas Agadi and the Mahayuti are almost very similar. So what is going to give that delta? Like, is it going to be some leadership? Is it going to be some of the schemes that the previous speakers mentioned? The cash transfer to women, etc. Those are the things that we need to watch out for. And obviously, it will again boil down to candidate selection. We'll talk about Jharkhand later, but these are my comments on Maharashtra. ठीक, fair enough. We can go back to निरंजन शेट्टी जी। निरंजन शेट्टी, Yes, sir. 2019 में सबसे बड़ी पार्टी बने आप लोग, उसके बाद जो कुछ हुआ, दोबारा जब सरकार बनी, एनसीपी में फूट पड़ी, शिवसेना में फूट हुई, तब भी आप एक तरह से जूनियर पार्टनर के तौर पर रहे हैं सरकार में, लेकिन ये मैसेज भी गया कि आप किसी भी तरह से सत्ता हथियाना चाहते थे, इसलिए जो है वो आपने जूनियर पार्टनर के तौर पर रहना मंजूर किया, अदरवाइज आप ऑपोजिशन में थे तो वहाँ पे रह सकते थे। लेकिन जो आपने कहा कि विकास किया, ये सब कुछ किया, क्या ज़रूरत पड़ गई पिछले कुछ दिनों में ही? मुझे लगा कि कहीं मैं पढ़ रहा था 100 से ज़्यादा घोषणाएं आप लोगों ने एक के बाद कर डाली, और आज ठीक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बीएमसी के वर्कर्स को भी बोनस देने की घोषणा कर दी गई। फ्रीबीज के खिलाफ है बीजेपी, लेकिन फिर ये घोषणाओं पे घोषणाएं एकदम चुनाव के एन मौके से पहले होने लगती है, तो शक पैदा होता है कि काम पे विश्वास नहीं है, लेकिन कुछ लालच दिखा दिया जाए तो शायद काम बन जाए। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से मैथ्यू जी ने कहा, मुझे लगता है कि बेसिकली बहुत चीज इसमें उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बात की, फार्मर्स के बारे में बात की। फिर आपने कहा कि 2019 में हम सबसे बड़े पार्टनर थे। हम 2014 में भी अपने बलबूते पर चुनकर आए थे, जब शिवसेना हमसे अलग हुई, और 2014 में उसके बाद आपको पता होगा किस प्रकार से उद्धव ठाकरे और उनके जो सदस्य थे हमारे साथ जुड़े और हमारी सरकार में बनाए। अब उनको वो मौका परिस्थिति थी। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 में जब उन्होंने देखा इस प्रकार की एक घटना हुई जहां पर हम कुछ सीटों से कम रह रहे हैं इस सरकार को फॉर्मेशन करने के लिए, उन्होंने हमारे नेताओं के फोन उठाने बंद कर दिए। और जिस प्रकार से एंथनी साहब ने कहा बैक स्टैबिंग, मुझे लगता है कि उन्होंने आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। शरद पवार ये सबसे बड़े बैक स्टैबर्स माने जाते हैं, और जहां तक उद्धव ठाकरे जी था, उन्होंने भी इसी शरद पवार के हाथ में आज खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी बाला साहेब ठाकरे के साथ हमने निभाई थी कि हम हिंदुत्व के नाम पे जिस प्रकार से आगे निकले थे इस देश में, हम चाहते थे कि वो महाराष्ट्र थे। ठीक है, सॉरी, कम बैक। ठीक है, वो इमोशनल कोशेंट होता है ना, उसको वो उजागर करना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, आपने अगर डेवलपमेंट की है, जो मैथ्यू साहब ने सवाल उठाए, सब कुछ किया है, तो व्हाई दीज फ्रीबीज, द सो कॉल्ड फ्रीबीज? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से राजनीति में, जिस हमारे देवेंद्र फडणवीस ने जी भी कहा था, क्लियर कट कहा था कि हम राजनीति में हम साधु संत नहीं है। और जहां तक ये बात रहेगी तो स्वाभाविक है, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने हमसे बैकस्टैबिंग किया और महाविकास गठबंधन में जाके जुड़ गए, और उनकी एकमात्र इच्छा थी, यदि आप याद करेंगे तो जिस प्रकार से जब ये घटना, जिस प्रकार से जॉइंट मीटिंग हुई थी जहां पर अमित शाह जी थे, मैं पार्टी का प्रवक्ता इस नाते से वहां पर मौजूद था। निश्चित अंदर तो नहीं था, लेकिन मुझे जानकारी ये थी
कि जिस प्रकार से हमने बात की, हमने भी आपके जैसे कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछा, उनसे भी हमने जानकारी, कोई भी किसी भी प्रकार का फॉर्मूला वो चाहते थे उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते थे कि इस प्रकार की बातें हुई, लेकिन उधर कभी भी नहीं कहा। और ये क्लियर कट था कि देवेंद्र फडणवीस जी इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बावजूद उनको लगा कि नंबर गेम उनके फेवर में है और वो शरद पवार आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सॉरी सॉरी निरंजन शेट्टी, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मनु से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी को अगर समझो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि किसी आम आदमी को उसके चीजों को देने का ये आप कह रहे घोषणा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रलंबित रहे होंगे ना, ये बहुत सालों से उनकी डिमांड्स रही होंगी और उस कारण से उसका जब उपयुक्त समय आया उसको देना। अब आप इसको जो चुनाव से पहले उपयुक्त समय होता है, चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए उपयुक्त समय होता है। आपसे हम समझना चाहते हैं उतने दे सकते हैं ना, ठीक है, ट्रेजरी में जितना बिल्कुल पैसा होगा। देखिए एक और एडिशन हुआ था, बिल्कुल एक और एडिशन हुआ था निरंजन जी, मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहूंगा। जो अच्छा डिसीजन है वो है मदरसों के शिक्षकों की, टीचर्स की सैलरी को भी रिवाइज किया गया था। ये अभी से जस्ट 2 से 4 दिन पहले। उसका स्वागत तो जरूर हुआ, लेकिन उसको राजनीतिक प्रिज्म से भी देखते हैं। वो तो वहां जाके जम्मू कश्मीर में जाके सिलेंडर भी बांटने पड़ते ना, ईद पर भी सिलेंडर और मुहर्रम पर भी सिलेंडर देने की घोषणा कर गई। I have some points on that. Whenever compulsions होते हैं। it was in my mind. You, Mr. Antony. Yeah, we'll come back to Mr. Antony. Let's understand of the compulsion was the इसका जन्मदाता स्वयं कांग्रेस है सर। हमको ये याद करना होगा कि तो आप भी वही करेंगे फिर। देखिए आम आदमी So he has conceded with the cake, but he has conceded. You know, why should Manu, आज यदि आम आदमी भी जीत कर आ रहा है तो number cruncher Manu himself. Let's hear it from Manu. The ideological sort of backbone of BJP is given by the RSS. And what does RSS say? And I apologize for the accuracy of the words, but something like this. They say कि सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म, उसके बाद मेरा परिवार, फिर अंत में मैं. Now this is a very nice thing to say to a worker, but try selling that to a voter. That everything else before that was सर्वप्रथम फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी एंड थर्ड क्लास. सिर्फ आपको करेक्शन किया. Great, yeah. सही है, please. That's why I had apologized in advance. I may be wrong there, but something on the no, sorry. Now try selling that to the worker, so to the voter. Voter would say, "Hey, boss, it's very good." In terms of ideals, but it doesn't really serve my purpose, and my needs are immediate, they're very urgent today. What about them? And this is something that BJP was traditionally weak, not today, not in the Modi era only. You go back to the Vajpayee era. In fact, one of the primary reasons why 2004 was lost was because BJP did absolutely well when it came to fiscal consolidation, and they were in a great position in terms of the budgetary performance, but they did not promise anything like Narega, which Congress did successfully, and they reaped the results of it. And 2004 was a surprise victory for the Congress back then. And I think this is where a gentleman called Mr. Shivraj Singh Chauhan has done a very good, I would say, deed on his part. I can almost fathom like a scientist, looking at a test tube and then putting that Ladli Behan Yojana inside and watching the reaction go. And so BJP has struck gold, so as to say, in terms of being able to promise things. It has now understood the syntax. Whether they have copied Congress, one can arguably say perhaps yes. But then again, we have to understand that people in a democracy are the sovereign power. They decide, and I guess there is a demand, and that's why almost all politicians across the board are responding to it. Fine, sir. Advocate Matthew Antony. Yes, thanks to the BJP spokesperson Shetty Saab for conceding that they are copying from the Congress. Now let me tell you
a few things. That is, one is the people of Mumbai is going to look at the Adani scam and the stock market scam. The people of Maharashtra is going to see. Now, we have seen the teacher's salary, the BMC salary, and now the madrasas. I have a question to the BJP spokesperson here. So, do you agree that the Congress schemes in Karnataka and Telangana are right, so that you're copying it? And also, because you have a large number of significant Muslim population, you are given a madrasa rise, salary rise. Are you willing to give this in Kerala as well as in UP as well as in other states in terms of this one? And now, why didn't you do the BMC elections for the last 2.5 years? You have looted the city, you have looted the state, one after the other, one after the other. There was so much of scams in the state. So what is the BJP response to this to the people? And in terms of, all the freebies, why the freebies are being copied from Telangana and Karnataka in the state of Maharashtra by BJP? And 1,300 government orders were released in the last 10 days' time. So who was giving the information to the BJP government that elections are going to come and you should do all these things in a urgency, in a sense of urgency? What was the government doing in the last 2.5 years? Were you sleeping? And why didn't the toll waiver, which has been a long demand of Congress, didn't come up in the last 2.5 years? Yes. And only just in the eve of the election. And why didn't the Mumbai-Pune toll and the Mumbai Trans-Harbour Link toll and the Mumbai Sea Link toll not waived off? Is it only Mumbai and Maharashtra is only in the 5 points? So these are the questions which we need to ask the people of the BJP. May I respond? We get your point. Anthony, should I Yes, sir. respond? We'll come to you. We will take Bhanu Chandra's response, sir. Then we'll definitely come to you because we have to understand a very moot point here, Yogesh. अभी मैं 2 दिनों पहले झारखंड की राजधानी रांची में था. वहाँ चुनाव होने वाले हैं. ऐसी कोई सड़क का चौराहा नहीं था जिस पर बड़े बड़े पोस्टर ना लगे हों हेमंत सोरेन के, और वो विश कर रहे थे दुर्गा पूजा दिवाली के लिए. साथ ही कुछ फ्रीबीज कह लें या फिर जो एक तोहफे कह लें, उस तरह के भी कई पंडालों पर दिखे जहां पर लोगों को एक तरीके से प्रलोभित किया जा रहा था. नाउ Bhanu Chandra ji, what I want to understand from you is that what Mr. Anthony mentions, that suddenly there is a spree of finishing the old jobs that were meant to be done. Suddenly there is money also, they are allocated in a particular manner. It doesn't take much to understand, both in Maharashtra and Jharkhand, that yes, these are done keeping elections in mind. The question here is, how significantly does it impact the voters at such a fag end of this electoral cycle? Does it really have an impact? See, first of all, we have to understand that Reviism has replaced rowdyism as the new menace in Indian politics. Parties are now outcompeting each other on how much money to give. See, there is a social justice aspect to it. We should agree and accept it. Okay, and some of them is good as well. But I think, we are all going down the slippery slope. In every election, more money is promised. So we have to take care of it. We have very clear examples from Himachal Pradesh, Delhi, and Telangana as well. That these are becoming very ruinous policies because the money that is given out could be used for developing infrastructure, and that could promote sustainable growth. But that's for a different economic discussion altogether. But what we are seeing right now is that in the last minute, political parties don't want to lose that edge. Like they cannot they are afraid that one party that is providing 2,000 rupees to women or 1,000 rupees to the women, depending on the state, might actually have that marginal advantage. Political parties do not want to do that. But I think, in Haryana, one thing happened. Though they promised freebies for women, the BJP did not promise anything for the agniveers, right? Except for job offers. They did not say that they will go back to the old way of recruiting, etc. So there is some amount of fiscal movement that also comes into play. But we have clearly entered the era of katakat politics. BJP can make fun of Congress saying that it's katakat politics, but they do it themselves. And like somebody was saying, Madhya Pradesh was the pioneer in sort of giving out money for money as dose to people. Niranjan ji. Yeah,
Sir, what I would like to bring to your kind notice is I would like to ask. He congratulated me that I'm copying the Congress version. I would like to ask through this channel, would Mr. Anthony agree that whatever the freebies that were given by the Congress were wrongdoings? Will he accept that? Number one. Number two, he alleged about whether we are trying to copy the Telangana and various other states. No, sir, we are not copying anything. We are giving the rights which was been planned in a strategic manner. As I think, as Manuji also said, we came out with Ladli Bain. There was a need of such things during this, when we came into power. Before that, when we were together, it's everything was okay. Uddhav Thackeray was okay with giving such kind of things. And as rightly said, you need to understand it was the Congress government itself more than 30 years, almost 60 years have been Maharashtra has been come into existence. So more than 30 to 35 years, it was the Congress that ruled. And today, what is the situation? You are asking me about the farmers' issues. Mr. Sharad Pawar was the agricultural minister at the center and the chief minister for more than 3 to 5 terms over here in the Maharashtra. He never did anything for the farmers. And today, he has come up with a evil giant, Mr. Jarange, just to play cards of the discomfort among the society. That is what he's trying to. Of course, to counter such false narratives, we have to counter you. These are our counters. You do it. We are going to checkmate you in this election as in Haryana. ठीक है, मिस्टर शेट्टी आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि झारखंड के बारे में आपने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा आप नहीं कह पाएंगे। महाराष्ट्र में कितना अभी तक जो काम हुआ है उससे आप संतुष्ट है? आगे क्या काम आप करने वाले हैं? इन चुनाव में क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं जो आप सॉल्व करने का वादा महाराष्ट्र की जनता से करना चाहते हैं या करेंगे, या फिर सारा काम हो चुका है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब भी कोई चुनाव होता है 5 साल में ये पूरा पर्याप्त नहीं होता। यदि हम ये मानते कि 2019 में जिस प्रकार 2014 में हमारी सरकार आई और उसके पश्चात 2019 में वो सरकार की गति वैसे ही रहती, तो शायद मुंबई सिटी में जिस प्रकार से हमने मेट्रो के जो जाले बिछाए वो यदि हो जाता तो मुंबई शहर की जो यातायात की समस्या है वो सुलझ जाती। जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी ने भी ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग एलिवेटेड रेलवेज का एक प्रबंध करेंगे, वो भी शायद यहाँ पर अगर सरकारें सही ढंग से रहती और उद्धव ठाकरे हमसे बैकस्टेप नहीं करते तो पर्याप्त हो जाता। जहाँ पर जलयुक्त शिवार की बात है, जो पूरा हमारा देवेंद्र फडणवीस जी का एक दीदी है, उसको भी हमने यहाँ पर लेके आए। जब जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि खेती में वो गन्ना किसानों के कारण इस प्रकार से वो पानी का जो ये है बहुत कम होता है, तो उस प्रकार से हमने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की और यहाँ पर हमने ये भी किया कि किसानों को उनका जो मूल्य है वो भी दे पाए। तो बेसिकली ओवरऑल हमने ये भी कोशिश की थी कि उनको औजारे दे, जो उनकी औजारे चाहिए, फिर ये जलयुक्त शिवार, इस प्रकार से पूरे जहां पर आपने देखा होगा ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, हमने रेलों से पानी को वहां पर लोगों को ड्राफ्ट एरिया में भेजा। मतलब मैं स्वयं उस लातूर एरिया में गया था जहां पर मुझे जानकारी ये प्राप्त हुई थी कि वहां पर लोगों की विवाह नहीं होते थे क्योंकि वहां पर एक कप ऑफ सॉसर के भी पानी उनको पर्याप्त। तो ये जलयुक्त शिवार का एक बहुत बड़ा देन था जब इस प्रकार की घटनाएं। तो मुझे लगता है काम बहुत है, अभी पूरा हुआ नहीं है। निश्चित ही हम इसकी और काम कर रहे हैं अग्रसर से। कोशिश ये की जा रही कि जितने भी किसान हो उनको हम सुजलाम सुफलाम बनाएं और भी जितनी भी बातें हैं। लेकिन आज इन्होंने एक द्वेष फैलाकर ये जो पूरी हमारी जो संकल्पना है कि भाई हमारे महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम बनाए, कहीं ना कहीं इन्होंने जरांगे जैसे एक भूत को लाकर कहीं ना कहीं इसको रोक लगाने का कोशिश। ठीक है, मैथ्यू एंटनी, महाराष्ट्र में आपके क्या ऐसे मुद्दे होने वाले हैं जो लगता है कि आपको एज दे सकते हैं, आप लोग वहां उठाएंगे, और साथ ही साथ झारखंड में क्यों आप लोगों की वापसी हो, वहां क्या ऐसा काम कर डाला आप लोगों ने जेएमएम के साथ? मैं पहले महाराष्ट्र से शुरू करता हूँ। जी, I'll just tell my BJP friend here that you said, because you didn't get 2.5 years, you couldn't complete a lot of work. Then
Had you got a 2.5 years, you would have resolved the farmers' issue also. Now, you have been here in the government from 2014 till 2024 with a 2.5 years of difference. And yet you are blaming a Sharad Pawar and saying that, no, had you got a 2.5 years, you would have solved the entire issue. I'm not able to connect both. Now, also, the BJP government, who is claiming about so much of work, couldn't even protect a Chhatrapati Shivaji Maharaj's statue, which had fallen on the face of this government's corruption. Complete corruption of this government. And now, then you're looking at Nitin Gadkari not participating in the programs in Vidarbha, in Nagpur, for the visits where Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah has come. What is it showing? Is it showing cooperation, or is it showing some sort of a message? And also, the BJP is sunk with corruption across its parties. What is it that you're going to kind of do with this? So and also the point of the last 10 years of BJP rule in this country, barring the 2.5 years, a lot of investment which we got into, the MBA got into, was taken away to Gujarat. The diamond boss, which was taken away from Bombay to Gujarat forcefully, now most of the people are coming back because the infrastructure is not good. And the gift city, which was supposed to be given to Bombay, was given to Gujarat. When Mumbai is a commercial capital, you give it to Gujarat and see what is happening. Now, also see that what kind of corruptions these people are getting involved into with the infrastructure. Without completing the infrastructure, they are just completing and announcing the projects. It's leakage over leakage in all the infrastructure which is being announced to be completed. And Mumbai and Maharashtra missed the ITs. Who opened up the telecom policy? Who opened up the BFSI policy? Who opened up this one? It's all Congress. And after that, when the BJP was in government, they couldn't take mileage. Mumbai, as a commercial capital, lost out on the ITs, lost out on the startup, lost out on the GF, on the fintech, as well as in the alternative artificial intelligence. Where is the BJP government's policy despite saying promises? Where is the employment being created? Everything is being taken out of Mumbai and Maharashtra. The jobs have gone to Bangalore, the jobs have gone to Gurgaon, jobs have gone out to other places. So this is exactly what we are going to create. We are going to create a balanced environment. We are going to create employment. We are going to create opportunities. We are going to empower the society. And that's how we are going to come back to power. People of Maharashtra trust the MVA alliance to deliver better. That's why we have got 31 out of the 48 seats in the Lok Sabha. All right. Sir, now to Jharkhand, please, quickly. On Jharkhand, yes. The alliance is going to come back into power. The BJP's torturing of the chief minister, Mr. Soren, is going to come back heavily on BJP themselves, because the people of Jharkhand is going to respond back on how a tribal has been disrespected, dishonored, and all other things like that, despite the challenges with the environmental and other developments in that state. Because a lot of natural resources have got a lot of restrictions with respect to the environmental things, and yet it is kind of going in terms of development. So we will see to it, because our manifesto will promise what all we are committing to the people, and that will take the people to kind of respond in a positive side to us to form the governments in both these states. Right, fair enough. The expectations, योगेश, और जो उम्मीदें हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, मैंने अक्सर देखा है और हमने भी देखा है साथ में कि मुद्दे बहुत सारे होते हैं, बट जब आप आखिरी में जब रिजल्ट आते हैं तो जैसे हरियाणा का मुद्दा रहा, और इसमें मैं मनु से ज़्यादा जानकारी लेना चाहूँगा कि मनु, हरियाणा में तरह तरह की बातें हुई, किसानों की बातें थी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाने की बात थी, गुड़गांव जो कि एक फ्लैगशिप शहर टियर 1 सिटीज़ में काउंट होता है, ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ के लोगों में एक तरीके का मिसट्रस्ट है, क्योंकि बारिश में वो तस्वीरें हम सब लोगों ने देखी थी। लास्ट में होता क्या है कि बीजेपी वहाँ पर स्वीप कर जाती है, और उसका कारण होता है क्योंकि उन्होंने जाट वोट इक्वेशन को दरकिनार करते हुए एक अलग ही इक्वेशन पर दे हैड पुट देयर मनी, देयर हेज, देयर बेट्स ऑन। इन योर लर्नड ओपिनियन मनु, apart from these sentimental issues about backstabbing, about putting someone in jail, what are the core issues on which the voters would finally cast their vote in these two specific states? So, taking from Haryana, first of all, let us see what Haryana
is so Haryana as a state, before the Modi sort of era, uh, was a hardcore Congress or a socialist, I would say, party polity, whereby BJP was always a fringe player. It was never the main opposition party or the ruling party. It was always sort of aligned with one party or the other to sort of form a uh, regional coalition over there. So what has changed? Basically, BJP after 2014 catapulted itself as a party for all the non-dominant social sections. Now, one may say, yeah, well, that's known. What's different in that? Well, the key difference here is the reason why the non-dominant, and I'm just using this as a placeholder term. I mean, the actual description would be just too large, but let us call them the non-dominant social segments. They clung to BJP as if it was for their dear life. Now, in the estimation of most pollsters and political analysts, there was a feeling that because of the 10-year-long anti-incumbency, people will sort of be unenthusiastic. The core voter of the BJP will not be enthusiastic, and they'll sit at home and don't care about the polls. Whereas the Congress core voter, the former the social coalition that was ruling the roost, would actually come out in great numbers. However, what happened was that indeed Congress polled better. Their social coalition did turn out in numbers, but there was a counter polarization. Now, one may ask, why was there a polarization? Actual, let us say, differences, to people's lives if there is a political change. If the case was that, yeah, well, whosoever can be the chief minister, we don't care. Like in Himachal, people didn't really expect much of There is some connectivity issue, I think. change between. Manu, we'll get back to you. We'll get back to you. Seems to be some Yes. internet issue there, Manu. We'll come back to you to finish your thoughts there. We have Bhanu there. Bhanu, on similar lines, योगेश मैं फिर से यही बात रखना चाहूँगा इनसे भी कि भानुचंद्र नागराजन से कि when it comes to issues, we have seen time and again different states, different story. Obviously, when Delhi votes en masse for Arvind Kejriwal, there are several voices which would say कि देखिए दिल्ली वालों को तो मतलब ही नहीं है, दिल्ली वालों को तो फ्री की चीज़ों की आदत पड़ गई है. When similarly in Uttar Pradesh, BJP comes back to power, romping on and riding high on the same freebies that is being given, उसको मास्टर स्ट्रोक हम लोग कह देते हैं. Irrespective of the political parties, लोगों को क्या चाहिए? जनता, what do they need? Is it the freebies that guide the elections? Is it the roads? Or is it some caste calculus that is at play? Magic formula for electoral success, that will be great, right? But see, like what we learned from Haryana is that politics is so confounding. We actually, especially analysts and political watchers, it's as if the politics is teasing us to come up with something and then giving up at the last minute. So I don't think there is a particular formula for that. Since I already spoke about Maharashtra, I'll speak about Jharkhand. I traveled in Jharkhand for more than 2 weeks the last couple of weeks. It is a very different election from Maharashtra. There's a clear anti-incumbency against the ruling party, the ruling coalition. Like what the Congress spokesperson, I guess, he was saying about the Atyachar against the tribal chief minister. That issue is over. It's not there anymore. I think the performance of the state government has been under question. The corruption issues against Hemant Soren is what people are talking about. And there is also a polarization happening between the OBCs and the tribals there, with the OBCs favoring the BJP. With the latest salvo from Chief Minister is the Maya Samman Nidhi program, which is the cash transfer for women.
The BJP is countering it with the Go Didi program, which I think offers almost a similar amount to the women. So, and also the infrastructure development, and especially in the Santal Pargana region, if you look at the northeastern part of Jharkhand, in fact, with the region where the chief minister comes from, it's a very, very pathetic state, and people are complaining about water. Given the fact that they are just like, less than 100 kilometers away from the Ganga. In fact, the Ganga flows through Sahibganj, etc. The water infrastructure and health and sanitation are absolutely pathetic. It seems that there are certain parts of our country that are still living in the 1980s and 90s. Those sort of situations are there. And also the urban tribal, the tribals that have moved to urban parts of Jharkhand, like say Hazaribagh, Ranchi, Jamshedpur. These people are actually not voting based on tribal dichotomy. They are actually like looking at how progressive Jharkhand could become and how they can benefit from the economic growth. So I think it's a very, very interesting content. One last point before I give it back to you is like both in Santal Parganas and in the Palamu region, the Palamu section of Jharkhand, the religious polarization from Bangladeshi migrants and here the Christian conversion is a very, very big issue. People are working on the ground on that, and we will see the results of that in elections. Back to you guys. ओके जी मनु, अगर आप सुन पा रहे हैं जो इश्यूज़ को कंटिन्यू करने वाली ही बात थी, भानु ने जिस तरह से अभी बात की, हमने महाराष्ट्र की बहुत बात कर ली, झारखंड की अगर बात कर लें, ये रिलीजियस पोलराइजेशन वाला इशू तो बहुत पहले से अमित शाह जाके वहाँ कह रहे हैं। हेमंत सोरेन बिस्वा तो वहीं बिठा दिए गए हैं, लग रहा है इसी काम के लिए कि देखिए आप वहाँ पर क्या समीकरण बिठाए जा सकते हैं किस तरह से। इसके अलावा झारखंड मिनरल रिच स्टेट भी है। आपको क्या लगता है कि ये इमोटिव इश्यूज जो हैं ये ठीक है, इसके अलावा कौन से ऐसे रियल इश्यूज होने चाहिए वहाँ पर हैं जो इन इलेक्शंस में मायने रखते हैं वहाँ के आम झारखंडी आदमी के लिए? देखिए, जो भी दुनिया भर में जहाँ जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ अक्सर हम देखते हैं कि किसी न किसी तरीके की एक राजनीतिक अस्थिरता रहती है। अब उसमें कई मौकों पे वो बहुत भीषण हो जाती है, जैसे अफ्रीकी देशों में आप कह सकते हैं, और कई बार जो होती है वो फिर भी एक तरीके से होती है, पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई कि ये वायलेंट बन गई या यहाँ पे हिंसा का एक वो आ गया। तो झारखंड में हम अगर देखें कि खनिज पदार्थ बहुत हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप भी बहुत है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हम ये पाते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट उतनी नहीं है। उसका कारण क्या है? सामाजिक समरसता। झारखंड एक बहुत डिवाइडेड स्टेट है, जिसमें ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की बात हो जाती है, अक्सर प्रदेश के वर्सेस बाहरी लोगों की बात हो जाती है। फिर अब नए ये भी एंगल आ गया है कि भाई क्या वहाँ पे बांग्लादेशी आके रह रहे हैं या रोहिंग्या आके रह रहे हैं। तो जो कोई भी खनिज से परिपूर्ण जगह होगी वहाँ का उसका दंश ये है, उसके साथ ये होगा। लेकिन अब बात यह है कि इलेक्शन में क्या मुद्दा रहना चाहिए। मेरे मुताबिक झारखंड की जो इस वक्त राजनीतिक परिदृश्य है उसमें सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो पॉलिटिकल पार्टी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेके चल सके। देखिए, ये कहने में विरोधाभासी बात है। देखिए, एक तरफ दल हैं जो करेंगे ध्रुवीकरण ट्राइबल नॉन ट्राइबल का, दूसरे वाले ध्रुवीकरण करेंगे राजनीति धर्म पे, शायद तीसरे होके वो शायद जाति पे करने की कोशिश करेंगे ध्रुवीकरण। तो ध्रुवीकरण एक ना एक तरीके से हर कोई करेगा। सवाल ये उठेगा किसका ध्रुवीकरण जो है वो कम टॉक्सिक एक तरीके से कह सके, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को लगेगा और वो बाजी मार जाए। कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक बिल्कुल ही अच्छे आपके पास चॉइस है और दूसरे बहुत बुरे हैं। नहीं, बात ये होगी कि कौन जो है वो कम आपको लगेगा कि भाई कम दुख देने वाले होंगे और शायद वो जीत जाएंगे। ठीक है, कोशिश उम्मीद करते हैं बेहतर राजनीति के भविष्य के लिए कि इस टॉक्सिसिटी से बाहर राजनीति हमारे पास आए। खत्म करने से पहले दो सवाल, एक निरंजन शेट्टी जी से, एक मैथ्यू जी से। बहुत छोटे में आंसर चाहेंगे आपका। निरंजन शेट्टी, सरकार की वापसी होती है तो इस बार मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे या फिर आप अजीत पवार या शिंदे साहब कोई ही मुख्यमंत्री रखने वाले हैं?
देखिए ये तो राजनीतिक सवाल है, निश्चित ही ये इसका जवाब मेरे पास तो होगा नहीं। आप ये देवेंद्र जी या अमित शाह जी से पूछ सकते हैं। और जहां तक देखिए, और दूसरी बात ये है कि जिसका ज्यादा चुन के आएंगे वो निश्चित ही उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो आपने इशारों में बोल दिया है फिलहाल तो कि क्या नंबर रहता है। मैथ्यू साहब, आपकी तरफ क्या है? वहां पर भी कई सवाल हैं, कई चेहरे हैं। You have seen the Congress party and we're ruling with the alliance. So it will be a collective decision after the election results. We are hopeful that we will have a unified decision for a chief minister in the state of Maharashtra as well as in Jharkhand. And I want to say one point on Jharkhand. The religious polarization is an Amit Shah technique which is being played on the states of Jharkhand and Chhattisgarh, as well as on the mineral parts of it. The mineral parts of it needs a lot of conscious decision making from our side, for the simple fact that the environmental issues which are becoming very, very large in the country needs to be taken care into consideration while we explore on the minerals. The other feedback from both independent people, we will take it as a feedback on what is the election mood like, and we will definitely kind of consider that in our election manifesto preparations when it comes to the infrastructure as well as on the other feedback. There's no point in debating on that one. We will consider it positively to kind of fight the elections and win the vote of confidence from the people of Jharkhand. That's all I would like to say. Thank you very much. Right. Fine. Thank you, Bhanu. Very quick reaction. The voters hold the key. Wednesday are the polling dates for both Jharkhand and Maharashtra. How do you reckon? What is your message to them? So I think people have become very sophisticated in understanding of what they want, and they are going after it. We can actually the old paradigms on which we assess voters, ये तो ये समाज के लिए वोट देते हैं या इस मुद्दा के लिए वोट देते हैं, that is all gone. Okay, so and the political parties are also adjusting to that expectation. So I think it's going to be a very interesting elections, very contrasting elections. Maharashtra is going to be nuts and bolts, and Jharkhand is going to be based on wave and anti-incumbency and bigger issues. So big issues and small issues. So very contrasting elections. Right, and one question that I always take from Manu whenever he's there on the show, Manu, फिर से एक बार बिगल बज चुका है, रणभेरी जो बज चुकी है चुनावों की। सेफोलॉजिस्ट के लिए, नंबर क्रंचर्स के लिए फैमिली को क्या मैसेज रहता है? खाना टेबल पे ही दे देना या फिर मुझे डिस्टर्ब मत करो? इस बार मैसेज ये थोड़ा और जोर लगाएंगे, मेहनत ज्यादा करनी होगी आफ्टर द हरियाणा थिंग। राइट आज इनफैक्ट राजीव कुमार ने सीईसी ने भी उसका नोट लिया है। ही हैज वेरी स्ट्रांग वर्ड्स फॉर पोलस्टर्स। Well, I mean, as they say, as they say, failure has no fathers. So failure has no father, success has me. So we will have to speak even more tougher to Rajiv then on a lot of shortcomings from his side, or the election commission side. Right. When you win in Lok Sabha, you don't object. But when you win in Lok Sabha, it's okay. But when you lose in Haryana, you have many questions. No. See, I know that time is running over. Time is running over, but I'm saying it was a strategical play, whatever it is that. But that's not the topic here. We'll decide. We'll debate on another day. We have our disagreements. योगेश, मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो जरूर ये ईवीएम वाला जो एक राग कहेंगे उसको छोड़ना होगा, लेकिन बीजेपी को भी ये राग बदलना होगा कि आप जहां जीते हैं वहां तो नहीं बोलते, बिकॉज इस बार जो काउंटिंग को लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे, दैट वाज समथिंग। No, I will say one thing. I'll just say one thing and close. शुरू कर दिया है, अभी से उन्होंने चुनाव आयोग को चैलेंज कर दिया अभी। No, I will just say close with one thing. Who wrote the book on the fault side of EVMs in 2009? If his name is GVL Narasimha Rao, who is he? And the foreword was written by LK Advani, stating that the election machine, EVM machine, is a fake one.
2014, that is why we could सर write that. ये सर ये होता है ना, जब सत्ता में We होती है did कोई that पार्टी, corrective उसको measures दिखता है, in जब the वो ऑपोजिशन EVM, में रहती and then we है came back. तो Then we 70 came रुपए in किलो प्याज 2014. पहुंचता था, 70 रुपए किलो प्याज पहुंचता था, तो गले में माला लटकाकर सड़कों पर आते थे। ठीक है, आज नहीं है, आज 80 रुपए 120 भी पहुंचता है तो कुछ शोर नहीं होता है। तो ये जो ऑपोजिशन में रहता है उसको दर्द उसी वक्त महसूस होता है, जब वो सत्ता में रहता है तब उसको दर्द महसूस नहीं होता है। बिल्कुल। खैर, Smriti Irani had dry eyes after crying all out, for the gas price increase in 2012, but now, she, I think, we all know that. We all know that. That's what it is, so we all know it, so let's not get there. Yes. या प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आगे क्योंकि अब बहुत से और कार्यक्रम होंगे और चुनाव का जैसे जैसे माहौल और गर्म होता रहेगा, आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस, थैंक यू। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप वन इंडिया हिंदी को और वन इंडिया न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए यूट्यूब चैनल से। इसके अलावा हमारी वेबसाइट्स है hindi.oneindia.com और oneindia.com अंग्रेजी की वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए, तमाम खबरों को, एनालिसिस को वहाँ पर पढ़िए और अपने कमेंट्स छोड़िए। और कुछ नया चाहते हैं आप, वो भी वहाँ पर आप लिखकर हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Absolutely, Yogesh. And in this election season, obviously, One India is leaving no stone unturned for you from the quick updates, as it has started once again with the announcement of the dates, both One India YouTube languages channels and the website oneindia.com/ the particular language that what you belong to, what you prefer, is available. Do visit those websites. Do visit our page also on YouTube. And trust me, I mean, you would not just get the latest updates, but also unique angles to the stories, to the plans that Election Commission has to the political party, everyone. Thank you so much.